भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। This kind of complete lawlessness, jungle raj, without resorting to the rule of law, encounter killings have always flourished under the gentleman and continue to do so. आज संविधान के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। एक एक कर करके इन संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी इनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। Against encounter killings and encounter politics, because very often in the name of encounters the police just goes ahead and shoots a criminal who they are looking for. According to the law of this country, a criminal and the crime that is committed has a framework. Arrest the man, put him in jail, give him the strictest of punishments. But encounter killings are something which have no place within the legal framework of India. The so-called encounter killings of the UP government are shown to be one-sided killings by the police. It doesn't surprise me because I remember you and your colleague just telling me before this that this gentleman was brought from Gujarat to Meerut, and in connection with that the Honourable Chief Minister of Uttar Pradesh had Mr. Ajay Bisht had actually said that gaadi palat jata hai, which means cars can overturn, right? Yeah. So his real name is Ajay Bisht. He calls himself a yogi, but that is his correct name. So I prefer to call people by their real names. So anyway, his car overturned, and the car, he says, "Gaadi to palat hi sakta hai." So the other name for Mr. Ajay Bisht was actually Mr. Togdo, because whenever he was Chief Minister, even when he was MP, he would like to tell his police and his law and order enforcement agencies that Togdo, which means finish them off. So this kind of complete lawlessness, jungle raj, without resorting to the rule of law, encounter killings have always flourished under the honourable gentleman and continue to do so. So I hope that the people of India will see this for what it is. हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेंगे और अपराधियों के समर्थन में जो राजनीतिक दल खड़े हैं प्रदेश की जनता ठीक से देख रही है और इनको